Hello students, welcome to Promote classes. So today we will analyze ASO previous year English paper. We'll discuss the paper thoroughly. So students, before starting the video, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛିଟା information ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି. My name is Payal Soni and ମୋର 2 years ର experience ଅଛି English ଆଉ Home Science competitive examination ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଉପରେ. OPSC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ପଢ଼ାଏ ASO ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ASO ପାଇଁ ବି ପଢ଼ଉଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ଉଛି ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରେସି ରାଇଟିଂ ଏସେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟରେ ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ବେସିକ୍ରୁ ନେଇକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ପୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର କରାଉଛି ଆଉ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ସରେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛି सो स्टूडेंट ए वीडियो रे मु आपन 2019 जो लास्ट एएसओ सेक्रेटरीट रो एग्जाम हेतिला से पेपर टा मु एनालाइज करिवि काइना तापता एग्जाम हेइनी तो डिस्कशन करिबा एथरे एनालाइज करिबा आपनकर जहां भी डाउट थिबो से पेपर इंग्लिश लैंग्वेज ऊपर सेटा क्लियर करि देबी मु आज सो ट्राई करंतु वीडियो टा को एंड तक देखिया पे आ आपनकू बिल्कुल भी बोरिंग लागबनी मजा आसीबो कहीं आमर प्रमोद क्लासेस रे को भी वीडियो बोरिंग न थाए सबू बहुत ही आपन एंजॉयमेंट संगे आपण लर्न भी करेंगे बहुत किसी सो चलतु आज वीडियोटा स्टार्ट करवा तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे व्हाट डिस्टिंग्विशेस द लार्जेस्ट रूम इन द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम इट्स यूज इन द सेकंड तो ये सेंटेंस दिखाई आपन को दीटा सो से दीटा सेंटेंस रे आपन को कही जो लार्जेस्ट रूम दिया जाए जहाँ विषय मेंशन है फर्स्ट सेंटेंस रो लार्जेस्ट रूम माने और सेकंड सेंटेंस रो लार्जेस्ट रूम ऊपर कौन डिफरेंस अच्छी डिस्टिंग्विश पचारि आपन को सोटा कौन हम देखंतु द लार्जेस्ट रूम इन द बिल्डिंग can take turn dining tables and some 40 odd chairs फास्ट रे आपन गोटे रूम विषय ही कहि जो थरे टर्न डाइनिंग टेबल्स अच्छे और 40 odd chairs भी अच्छे but in the second sentence the largest room in the world is a room for improvement okay but in the second sentence रे कौन largest room रो मीनिंग एटी कहि देछि the room for improvement तो यार आंसर कौन हबो देखिए फर्स्ट पढ़ा द फर्स्ट रेफर्स टू फिजिकल स्पेस हाँ ठीक अच्छे फर्स्ट सेंटेंस तो आमर फिजिकल स्पेस को रेफर करुच्ची while the second refers to the metaphorical okay but the second one refers to the metaphorical so फर्स्ट तो जानी पाली फिजिकल स्पेस उपरे तो सेटा ठीक अच्छी एटा तो जमती हेले हबो एटा ठीक अच्छी बीट नंबर एटा जो जमती कही फर्स्ट रेफर्स टू फिजिकल स्पेस ठीक अच्छे while the second refers to the metaphorical obviously second टा metaphorical वे रे ही कही जमती सेटा तो रूम विषय कहनी सेटा कही कि the largest room in the world is a room for improvement so आमर आंसर है जीवो फर्स्ट वन ओके एबे जीवा हमर नेक्स्ट क्वेश्चंस को let's go for a walk okay एटी देछि let's go for a walk so add the right question tag तो इथरे कोनटा हबो shall we can we may we will we कोन हबो एटी देखंतु let's लागिछि तो let's लागिला माने ही आमे कोन बसेबा shall we ही नबा ओके तो आंसर हबो shall we let's go for a walk shall we okay John and Jenny were two neighbors who know each other very well they live in the same town okay put this in the past tense तो ये गोटे आपन को सेंटेंस दिया है सेटा कहै जाई कि ताको पास्ट टेंस रे कहया पे तो हमें देखिवा ऑप्शन कोन अछि जॉन एंड जेनी वर टू नेबर्स हु हैव known each other very well they lived in the same town एटा हबनी एटा परफेक्ट आस जाउची सेकंड दिया है जॉन एंड जेनी वर टू नेबर्स हु हैड known each other very well they were living the same town एटा भी हबनी ओके एटा भी रॉन्ग अछि देन आमे सी टा पढिबा जॉन एंड जेनी वर टू नेबर्स हु knew each other very well they lived in the same town एटा हबो आम आंसर आमको कहि छि एठी पास्ट टेंस रे दबा पे ताको पास्ट टेंस रे पुट करिया पे सो आपनकर आंसर कोन हबो एठी सी ओके number C will be the answer
सो एबे देखिबा 4 नंबर 4 रे इट्स रेनिंग हेविली आई विश आई डैश एन अम्ब्रेला विथ मी तो एटी कौन हबो आई डैश एन अम्ब्रेला विथ मी आई took an umbrella with me okay question number 5 देखिए is it too early to call up someone on the phone it's already 8 o'clock in the morning said my brother in indirect speech what would be the most appropriate एटी reporting verb हमको पचारची कौन हबो appropriate reporting verb तो एटी most appropriate reporting verb हबो asked okay asked आमर हेजिबो most appropriate reporting verb set टा आमर कोन हेजिबो एटी asked जदि आमे सेटा indirect speech in indirect speech what would be the most indirect speech रे कले सेटा आमर हेजिबो asked देखिबा एबे क्वेश्चन नंबर 6 टा क्वेश्चन नंबर 6 होची to the question are your clothes wet what would be the most appropriate answer from the among the following तो एटी गोटे क्वेश्चन पचारची why are your clothes wet तार appropriate answer टा कोन हबो सेटी हमु चारटा बिट दिया हेचे ता भितर हम आंसर चूज करबा कोटा appropriate लागिबो जेमति करेक्ट सेंटेंस हम गोटे चूज करार अछि तो बिट नंबर 1 अछि my sister has watered the garden एटा हबनी I have been watering the garden एटा ठीक लागुची नेक्स्ट बिट टा देखिबा I watered the garden until my sister came एटा भी हबनी my sister has been watering till now एटा भी हबनी तो यार ऑप्शन हे जिवो बी नंबर टा I have been watering the garden मो गार्डन रे पानी दउतली सो दैट मो क्लॉथ्स टा ओदा हे गला ओके जिबा क्वेश्चन नंबर 7 को a canteen for student can also be written as student canteen जे students plural noun रे अछि तो आमे देखिबा जोटे प्लूरल नाउन जेतेबेले थिबो सेतेबेले कोन होबो ना एस परे आपनकर जो लागिबो एपोस्ट्रोफिस टा ओके सो एटी कोन हे जिवो स्टूडेंट्स कैंटीन ओके देखंतु एटी बिट नंबर डी डी रे अछि स्टूडेंट्स कैंटीन सेटा हे जिवो आंसर ओके Number 8 देखिबा they organized a party dash his honor that Ajita was not invited dash it was a shame she admired him most and it seems unlikely that she would forgive the organizers dash their omission तो एठी हमको कोन फिलिंग द ब्लैंक्स दिया अछि सेतरे करेक्ट हमको पुट करार अछि प्रीपोजिशंस गुडा ओके तो हमें देखिबा एठी कोन हबो they organized a party in his honor that Adita was not invited to. Okay, it was a shame. She admired him most, and it seems unlikely that she would forgive the organizers for their omission. So it is in 2 for. तो को option है अच्छी option number C. तो it option number C टा है हमारा answer. जिबा next को I am done for the day. I would now dash. तो इटा भी fill ups अच्छी तो एइथरे कौन हबो appropriate answer देखो तो तो एइथरे हमर appropriate go home come home arrive home back to home तो एइथरे I am done for the day I would now go home okay तो आंसर हे जो एटी ए नंबर नेक्स्ट देखिबा while he hit the dog in a sentence that makes a perfect sense the dog he hit makes incomplete sense okay unless we add तो he hit the dog ता गोटे परफेक्ट सेंटेंस हिसाब रे गोटे माने तार गोटे परफेक्ट मीनिंग आछे he hit the dog से गोटे कुकुर को पिटिला परफेक्ट मीनिंग आछे the dog he hit तापरे किछि नै गोटे इनकम्प्लीट लागु छी जब तक हमें किछि ऐड न कर दो तो ये चारटा ऑप्शन दिए छी ता भीतर हम किछि ऐड करे तो कोन हबो the dog he hit makes today तो हबनी when तो हबनी helped हबनी तो एटी बी नंबर हे जिवो yelped रो मीनिंग कोन high pitched crying okay बहुत जोर जोर से कांदिबा next देखिबा during the summer of 2010 I was in Kolkata what would the sentence be if you change the year to 2019 तो during 2010 I was in Kolkata मैं कोलकाता रे थिली 2010 रे तो एटा गोटे पास्ट रे अछि तापर दिया आइछि ताको हमें फ्यूचर टेंस रे जदी करछु what would be the sentence if we change the year change कर देले ईयर टा को कोन हबो तो during the summer of 2019 I will be in Kolkata during the summer of 2019 I will be in
Will I be in Kolkata during the summer of 2019? I go to Kolkata during the summer of 2019. I will go to Kolkata. तो ଏଇଟାରେ ସବୁଠୁ perfect କୋଉଟା ହବ future tense ରେ କୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି? Number 8 ଦିଆଯାଇଛି. Okay, I will be in Kolkata during the summer of 2019. I will be in Kolkata. Okay. ଏବେ ଦେଖିବା next ଟା ଆମର 12 number ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି degree mention ହେଇଛି ଆମର positive degree comparative ଆଉ superlative degree ରେ ତ ଏଇଠି ଯେମିତି fattest ଅଛି fastidious more fastidious and most fastidious ତ fast ର କଣ ହେଇଯିବ fast ରହିଯିବ faster and fastest okay C number ଟା ହେଇଯିବ answer देखिवा आमर 13 नंबर टा देखिवा the district collector did not dash the office bearers of the union his approval for holding the meetings during office hours माने एटा गोटे आपण देखंतु गोटे नॉर्मल एटा बहुत इजी क्वेश्चन आपण जानि परिबे जेतेबेले आपण छुआ बेले कि एबे इवन एबे भी जति कॉलेज टाइम रे आपण जति प्रिंसिपल को गोटे एप्लिकेशन दउचंदी आपण को छुट्टी दरकार होची कि आपण किछि परमिशन बेसिस रे मागुचंदी ଆପଣ ହଲିଡେ ପାଇଁ କି ଭ୍ୟାକେସନ ପାଇଁ କିଛି ଛୁଟି ଦରକାର ହଉଛି ଆପଣ କଣ ଲେଖନ୍ତି କି ପ୍ଲିଜ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମାଇ ଲିଭ୍ therefore grant my leave ତ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଆପ୍ରୁଭାଲ କେସ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ ଓକେ ସେଠି ଆଲାଉ ହବନି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହବନି ଡେଲିଭର ହବନି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଓକେ ତ B ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର Then next देखिए what is a headline the top of a line of a page in a printed book the first line of a paragraph in a book the title of a news program on TV the title of an item in a newspaper तो एठी हेजिबो आंसर नंबर D टा हेजिबो ओके आंसर नंबर D टा कोन देछि the title of an item in a newspaper जो आर्टिकल और जो शॉर्ट पैराग्राफ टाइप रो ऐसे टाइप रो देता है सेगुडा को आमे हेडलाइन हिसाब रे पढ़ता था टॉप रे जो थाए हमर बोल्ड लेटर्स रे सेटा को ही हमें हेडलाइन कहू ओके the benefit of demonetization are moot what does this statement means तो एठी जो माने मूड रो मीनिंग ता जानते बे से माने नॉर्मली एटा करि देबे काहे कि ना देखंतु जो भी क्वेश्चंस दिया जायछि जेतेबेले आपण गोटे वर्ड टा दे दे कि पचारथबो यार करेक्ट सेंटेंस देखंतु तो सेटा जस्टिफाई करे कि से वर्ड टा जो आपण को दिया जायछि तारो आपण मीनिंग देखिबे देखि कि लिखिबार थिबो ओके तो ट्राई करिबे निज वोकैबुलरी स्ट्रांग करिया पई वोकैबुलरी स्ट्रांग हेले गुडा आपण आराम से कर देबे सो मूड रो अर्थ कोन मूड मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज ओके तो ये देखिबा ये सेंटेंस रे कोथरे मूड रो अर्थ देछि आ मूड रो आउटे मीनिंग अछि डिबेटेबल ओके what do we do not understand what its benefits are we do not understand what demonetization is we see the benefits of demonetization the benefits of demonetization are debatable तो debatability अछि जोटा मूड रो अर्थटा तो ए मीनिंग टा होची डी नंबर टा होची यार मूड रो मीनिंग ओके स्टेटमेंट टा ताको जस्टिफाई करूछ देखिबा देन 16 local authorities should submit schemes dash the minister concerned एटा भी गोटे फिलअप्स अछि dash approval dash no circumstances will direct application regarding schemes be entertained तो एठी हमर कोन हे जिवो देखंतु local authorities should submit schemes to the ministers okay concerned for approval under no circumstances to for under कोठी अछि बिट नंबर ए तो बिट नंबर 8 हे जिवो आपनकर आंसर सेकंड 17th को बळे आसंतु 17 रे हमर फ्रेजेस आ प्रीपोजिशंस गोटे साइड रे फ्रेजेस अछि गोटे साइड रे प्रीपोजिशन अछि तो ताको हमको मैच करियार अछि आ तार जो ऑप्शंस गुडा कोन हेछि ना ए बी सी डी रे दिया जाइछि आ सेई बिट रे आपन को कहि दैछि ए रो बिट 1 रो आंसर एटा हबो बिट 2 रो एटा हबो एमति सब दिया जाइछि तो फ्रेजेस आ प्रीपोजिशन दिया जाइछि तो जेमति देखंतु according to the sources एटी कोन हबो सॉरी according मु कहि दिले आंसर टाइ कहि दिली according dash the sources तो according लागुछि माने according to the sources ओके देन आसीगला एटी हमें मैच कर दबा 2 को according to the sources then different dash the first draft different from the what first draft ओके तो मैं एटा देखिबा बिट नंबर 1 रो आंसर होची 2 ए रे अछि आ डी रे अछि
नेक्स्ट देखिबा बिट नंबर 2 रो आंसर होची 4 बिट नंबर 2 रो आंसर एटी 4 अछि बट बिट नंबर डी रे आंसर टा जाउची 5 तो हमर आंसर एटी ए जीवो ए आ दुटा मु कहि दउची आपनकु बेस्ड बेस्ड डैश दिस इंफॉर्मेशन नंबर 3 टा based on this information. Okay, board dash the turn of events. 4 ta kon hobo boards by the turn of events, then consisting dash cards and letter of cards and letter. Last one the answer ta hejo last ta. Okay, बुझिएला यार ऑप्शन है गला ए नंबर टा. Question number 18 टा देखिबा. By this time in 2019 Sushan just finished her first degree in medicine. तो एटा गुटे फिलअप्स अछि एटा को आमे देखिबा चारटा ऑप्शन रो कोटा हबो. By this time in 2019 Sushan dash finished her. तो एटी कोन हे जिवो Sushan will be. Okay, question number 18 right. तो आंसर हे जिवो will be finished her first degree in medicine. We are in awe of this leader. We cannot approach him easily. Use the adjectival form of approach and rewrite the second sentence. तो हमको एटी जति भी ऑप्शन अछि तो तार हमें adjectival form रे approach रो meaning ता देखिबार अछि. ओके, तो एटी देखिबा कोटा हबो. He is hard to be approachable एटा ना. He is not easily approachable एटा टिके लागुची आंसर हबा बळिया. For him to approach is not easy. No, एटा हबनी. He is hardly approachable. तो b टा हेजिबा आंसर. Adjectival form of approach रे आपण justify आंसर टा कोटा हेजिबा. He is not easily approachable. Okay, देखिबा नेक्स्ट देखिबा. The politician made false claims and called his honest colleagues corrupt, but when the facts become public he has had to eat his words. What does the last phrase here mean? तो एठी eat his words माने से तो words तो खाई दउनी ना, सेटा तो सेमती मीनिंग रे नाइ गोटे इडियोमेटिक वे रे दिया जायछि. तो यार मीनिंग कोन हे जिवो to take back what he said. Okay, जो माने idioms पढुतेबे से माने एगुडा आराम से कर देबे. vocabulary idioms एगुडा डेली बेसिस रे आपण प्रैक्टिस करंतु. None of us dash to change the schedule unless some of you dash it inconvenient for some reason. तो none of us dash to change the schedule unless some of you dash it inconvenient for some reason. तो एटी wants एटी हबनी. एटा wants तो आमे लिखिबानी प्लुरल रे अछि. then want finds एटा भी लिखिबानी wanted. sorry, wants find तो एटा हबनी. then want टा तो ठीक अछि. finds हमर हबनी. wanted find ना, तो हमर आंसर हे जिवो want found. तो एटी कोन हे जिवो none of us want to change the schedule and some of you found it convenient for some reason. Okay, देखिबा identify the one word here that you cannot use before little आगुरु को word टा हमें एथरु यूज कर परिबे ना. चारटा ऑप्शन दिया आइछि तो या भीतर को word टा हबो देखंतु. तो एटी सो तो लागुची, टू लागुची, हार्डली भी लागुची, बट प्रीसियस केबे भी लिटिल लागुनी. तो हमें प्रीसियस एटी हमर आंसर हे जिवो. If I do not leave now dash complete the sentence the most sensible way. Okay, sensible way रे हमको सेंटेंस को कंप्लीट करियार अछि 23 टा. तो देखियो एटी कोन हबो. If I do not leave now my last bus will not go. ना एटा केबे भी हबनी. I shall miss my last bus. एटा आंसर हे जिवो. Only dash Shinrik would argue with that statement that most people learn their native language with dash fair degree of success. तो एटी हमरो आर्टिकल देखिबा. हमरो को आर्टिकल टा एटी लागिवो. तो हमरो एटी आंसर हे जिवो 24 रो ए नंबर टा. ओके,
Jiba 25 को the clerical staff in banks and finance department are supposed to have considerable skill with numbers in one word their ability is तो आमे जो clerical staffs माने बैंक रे अछंती तांका finance department are supposed to have तांकर considerable skills थाए with numbers तो सेटा गोटे one word रे कहे को गले कोन हे जिवो numerational okay. What is the meaning of hoard here? Hoard right कौन meaning अच्छे? Then again देखो गोटे vocabulary question ही जते vocabulary आपनकर strong थिबो सेते आराम से आपण करि परिबे ओके. यार meaning हे जिवो to store secretly okay. A number टा answer. There are reports of arson and looting in the city. We had better be careful. The news is quite disturbing. किछि देखिया दरकार नै. Disturbing ही answer हबो. Identify the correct sentence from the following. एटी correct sentence हमको देखियार अछि ए चारटा भितरु. They considered him a fool. They regarded him a fool. They considered him as a fool. They regarded him a fool. तो आंसर हमर कोन? They considered him a fool. एटा हे जिवो आंसर. When I reached the cathedral, the wedding ceremony does already began. The wedding ceremony had okay amati past perfect laguchi had already begun. In reported speech how will you read तो एटी गोटे आपण को दिया जायछि गोटे छोटो सेंटेंसेस किछिटा अछि छोटो पैराग्राफ टाइप रो तो देखंतु सेथरे रिपोर्टेड स्पीच रे ताकू जदी हम कहिबा तो सेटा केमिति होबा. I do not want to be forced into believing the God exists, said the girl. If God indeed exists as you assert, show me at least once where I shall see him like I see you now. तो इथरे आपनकर आंसर टा हे जिबा नंबर डी. मु सब बिट गुडा पढुनी काइना वीडियो टे लेंदी हे जिवो सो एटी नंबर डी टा हे जिवो आंसर. The girl explained that she did not want to be forced into believing that God existed, and if indeed he did as I asserted, she demanded to be shown him at least once where she might see him like she saw me then. Okay. You want to देखिए may you live happily and long. I in every formal English. What does this express? The may you live happily and long. तो एटी देखंतु ए जो देइचे सेंटेंस टा तार मीनिंग टा हम नॉर्मली लोकन को कोन केते बळे कहि थाउ एटा मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग माने सेटा कहिले तार अर्थटा कोन बुझा जाय डिजायर अप्रूवल हैप्पीनेस विश ता अर्थ तो विश सेटा हमें जतबळे जण को विश दोजु हमें सेतबळे कहि थाउ कि मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग. जनरली हमें बर्थडे रे काहा को कहि थाउ कि हैप्पी बर्थडे एंड मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग एमति कहि थाउ. सो एटा विश हो डी नंबर टा आंसर. Which of the following more polite as a request? गोटे रिक्वेस्ट करिवारे सबटु पोलाइट वे टा कोटा हबो. Will you lend me your scooter? Would you lend me your scooter please? Can you lend me your scooter please? Shall I take your scooter on loan? तो एटा कोन हे जिवो बी नंबर टा जिवो. Would you lend me your scooter please? Please लागिचे तो मोर एप्रोप्रिएट लागुचे. ओके. कैन यू तो हबनी कैन यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज एटा केबे भी हबनी कैन यू तो हमें कहिबानी एटा जस्टिफाई होनी तो एटी हे जिवो वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज. देखो व्हाट डज द फॉलोइंग 33 व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस रियली मीन. ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स. तो यार मीनिंग टा कोन होचे चारटा पॉइंट देचे तार हमें मीनिंग टा देखिबा. ही इज स्लीपिंग ऑन फॉर आवर्स. He has lost sense of time and he is still sleeping and he will not wake up now. तो या आंसर टा आपनकर कोन हे जिवो हमें देखि दबा आंसर नंबर सी. And he is still sleeping. He has been sleeping for 5 hours माने he is still sleeping. C टा इज आंसर. Coming to the next 34 एटी फिलअप्स देइची सेम हमको एप्रोप्रिएट एटी ऐड करियर अछि फिलअप्स रे. डैश डू यू विश टू सी डैश विशेस टू सी यू. whom do you wish to see? who wishes to see you? तो एटी whom आ who कोथरे अछि ए रे अछि तो किछि न देखि कि एटा हमर हे जिवो आंसर.
Next thing, only graduates are eligible dash this post. You must apply dash the register for filling your application. The registrar's office is adjacent dash the commissioner. तो एटी कौन है जीवो आपनकर 35 टा 35 है जीवो. Only graduates are eligible for this post. You must apply to the registers for filling your applications. The register office is adjacent to the commissioner. The for out to data to code D number the D will be the answer. Okay. Jiba 36 ko ame in the sentence the girl sang song while the boys played hockey. तो माने गोटे सेंटेंस आपन दिया छि the girls sang song while the boys played hockey. तो at the same other time at the same time at different venues at the same venue. तो या अर्थटा कोन हे जिवो एठी बी नंबरटा हे जिवो at the same time. माने जेतेबेले झियो गुडा गीत गाउथले सेई टाइम रे ही पुओ माने हॉकी खेलथले. ओके. डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच. हमें पार्ट ऑफ स्पीच देखिबा एथरे. Of first in the following sentences, I kept first for a month. I cannot first anymore. I ran first. Still I could not catch the first train to Bandra. Okay. तो यार आंसर टा आपण कोन हे जिवो देखंतु. फर्स्ट जो हमर एठी दिया जाईची I kept the first for a month. एटा हे जिवो noun. I cannot first anymore. Action हे अछि verb हे जिवो I ran first. Ran first. Adverb हे जिवो still I could not catch the first train. एटा noun आगुरु अछि the adjective हे जिवो. ओके. D हे जिवो आंसर. Active रे दिया जाईची someone has picked my pocket. तो in passive voice this will be एथरे passive voice रे कले कोन हे जिवो my pocket was picked. Who has picked my pocket? Someone pockets has been picked. My pocket has been picked. तो D टा हे जिवो आंसर passive रे. Okay. 39 देखिबा I have not met my brother lately. A phrase closest to lately would be. तो एठी lately को जाईची तो तार मीनिंग दा कोन हे जिवो in the recent year हबनी late in the year ना later than last month no in the recent past lately माने किछि दिन आगुरु ही. Okay, spot the incorrect sentence. एथरे incorrect sentence देखिबा 40 नंबर रे. Don't talk so loud. ठीक अछि. I can ball fast. She is not here. You can only guess. तो एथरे incorrect हे जिवो she is not here. What does ought to in the following sentences suggest? तो ought to sentences रे कोन suggest करछि जो sentences अछि सेरे ought to कोन suggest करछि. Compulsion and obligation, moral obligation or desirability. एटी जो सेंटेंस दिया है we ought to love our neighbors. We ought to love our neighbors. तो कौन एटी moral obligation or disability. Okay. 42 देखिबा combine the following simple sentence into one complex sentence. Combine एटी गोटे sentence दिया है ताको combine करियार अछि simple into complex. He will be late. That is certain. तो एटी कौन हे जिबा हमर आंसर. That will be late for him certainly. Certainly he will be late. So this will be the answer B. आमु किछि पढुनी B टा ही आंसर हे जिवो. Just a minute. ना certainly he will be late एटा हबनी. It will be certain that is late for him ना एटा भी हबनी. तो आंसर D हे जिवो. It is certain that he will be late हे जिवो. Complex रे आसले एमती हे जिवो. Okay. 43 देखिबा we derive nouns from some verbs. For example, from grieve we derive grief. Okay. From speak we derive speech etc. Likewise from weave we derive. तो weave रे एठी जदि आमे तारो weave रो noun form ता आमे noun को जेतबेले we derive noun from verb. Okay. जेतबेले आमे यार noun form ता देखिबा noun रे ing ही लागतबो तो एटा हे जिवो weaving हे जिवो. तो एटा हे जिवो आंसर. How long dash for the bus? How long? एटी गोटे fill in the blanks अछि.
तो एटी कौन है आंसर हाउ लॉन्ग डैश फॉर द बस हाउ लॉन्ग ए हैव यू बीन वेटिंग फॉर द बस एटा है आंसर 45 टा देखिबा चलंतु I have been working in the office for 2 weeks. एटा भी फिलअप्स अछि I dash no trouble so far. I have had no trouble so far. एटी एटा है आंसर ओके 46 टा देखिबा I have had some trouble getting good stationery. I did not shop at two places but I was disappointed. तो एथिर कौन हबो हमको फिलअप करियर अछि फोनी तो either both neither each तो एटी appropriate है जिवो neither okay तो एटी कंपेयर करा जायछि तो I have had some trouble getting good stationery. I did not shop at two places, but I was disappointed. Neither was well stocked. Okay. 47 देखिए rewrite the following sentence beginning with what ଆଉ ତାର ending ରେ ଗୋଟେ exclamatory mark ରହୁଛି okay या exclamatory mark ହିଁ ଅଛି सो देखंतु स्टार्टिंग होतबो वर्ड रु तो कोन एटी स्टार्टिंग को कोडा एटी सब तो वर्ड रु ही स्टार्ट होउची तो यार सबटू एग्जैक्ट कोटा वो व्हाट वेरी clever officer sees now what is very clever officer she is what cleverness she has as officer what a very clever officer she is तो एटा हमको appropriate लागुची एटा ही हेजबो आंसर तार 47 ओके spot one correct sentence among the following तो एथरे चारटा पॉइंट्स अछि तार करेक्ट सेंटेंस ता हमको कहबार अछि तो करेक्ट सेंटेंस देखंतु have I to come sorry have to come to office every day it is hard to make you to understand simple things I have known him for a long time I must relay letters promptly तो एटी कौन है आंसर टा सबुठु appropriate होची it is hard to make you understand simple things okay 49 देखिबा rather than finding a dash to a problem some people delight in finding a problem to a dash तो एटी आमे गोटे नॉर्मली देखिया गोटे प्रॉब्लम रो कोन आमे देखु ताऊ गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन ही आमे चाहू तो सॉल्यूशन ही हे जो आंसर ए सॉल्विंग तो हबनी इशू हबनी ओके तो सॉल्यूशन ही हे जो आंसर स्पॉट द ऑड वन ऑड वर्ड इन द इतरे चारटा भीतर गोटे ऑड वर्ड अछि हमको ताको पॉइंट आउट करा अछि मॉडर्निटी मॉडरेट मॉडर्निज्म मॉडर्न तो ए तीनटा सिमिलर अछि मॉडर्निटी मॉडर्निज्म मॉडर्न बट मॉडरेट टा गोटे लाइक एटा पूरा अलगा ही हे जाउची तो एटा हे जिवो तार ऑड वन आउट बीटा हे जिवो ऑड आ ए तीनटा तो मॉडर्न को ही जस्टिफाई करे मॉडर्निटी मॉडर्न मॉडर्निज्म तो मॉडरेट हे जिवो आंसर 51 what do you understand from the following sentence तमे ए सेंटेंस रो कोन बुझुचो the areas of town near the rivers are liable to flooding तो या मीनिंग रे अपन कौन बुझचंदी these areas are often flooded these areas are lying low these areas need protection the river flood in this areas तो एटा ही जो आंसर these areas are often flooded 52 देखिबा in which of the following does just appear in the correct order तो just एटी को correct order रे appear हिची चारटा ऑप्शन है हिची I just have returned from a wedding in Baleshwar I have returned just from a wedding in Baleshwar I have returned from a just a wedding in Baleshwar I have just returned from a wedding in Baleshwar तो एटी आंसर टा कोन हे जिवो I have just returned from a wedding in Baleshwar एटा हे जिवो perfect justify করছি okay d number টা 53 देखिबा their son went off and got married last week just like that but does just like that एटी जो दियछि their son went off and got married last week तो सेटी went off ର meaning टा कोन अछि just like his parents just like we expected suddenly and unexpectable predictable and wisely तो कोन हे जिवो एटी suddenly and unexpectable okay 54 देखिबा what idiomatic expression conveys the sense of a original truth of a statement by
disagreeing with it. Okay, so the idiomatic expression conveys the sense of a general truth of a statement by disagreeing with it. तो यार ऑप्शन टा देखिबा हमें कोटा हेजिबो को idiomatic expression टा हमर एठी चारटा बिट रो कोटा the exception proves the rule proves the exception, where there is a will there is a way, where there is a way there is a will. तो कोटा हेजिबो आपनकर एटा हेजिबो आंसर काहेकि ना सेटा गोटे इडियम को कन्वे करछि ट्रुथ विषय रे. ओके, द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल. ओके, ओरिजिनल ट्रुथ टा जो कहा जाइछि क्वेश्चन रे कोटा कन्वे करछि तो सेटा द एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. Away is your answer. What does this sentence really mean? A book we have not read is no more non-existent than a country we have not visited. तो या मीनिंग टा कौन है जीवो? तो चारटा ऑप्शन दिया है जी. देखिबा, both the book we have read and the country we have visited do not exist on the earth. On earth, we have read the book, but the country exists even if we do not visit it. We have neither read the book nor visited the country. Both the book we haven't read and the country we have not visited nevertheless exist. So 8 is the answer. 56. Okay. 52nd देखिबा, I don't know Mr. Peter's age, but he seems quite old. What does guide mean here? Quite mean here. It quite a meaning ta कौन होचे? The quite a meaning है जो silently looking fairly not very. It fairly है जो तारा अर्थ टा. Okay. English is different dash German in that the latter is a highly factored language. तो ये कौन है जो appropriate Phillips रे देखिए गोले कौन होबो? English is a different from German. Okay. 59 देखिबा, when you cannot see the picture clearly you say जेतोले picture को clearly आपण देखि पानाती कौन कहबे? I unable to see the picture clearly. I cannot hardly see the picture clearly. I cannot able to see picture clearly. I can hardly see the picture clearly. तो एटी कौन है जिवो? D है जिवो आंसर. I can hardly see the picture clearly. एटा appropriate अछि. Okay. Question number 60 देखिबा, inflation is like seen. Every government de-announces it and every government practices it. Which of the following reading of the statement is more or less correct? तो इधर चारटा ऑप्शन दिया है जी कोटा इटा को जस्टिफाई करूचे. ओके, तो देखिए फर्स्ट है inflation is a sin but government hardly knows this. Inflation is not a sin but when a government practices it, it becomes sinful. Inflation is sinful but every government finds it inescapable. Inflation is less sinful when every government practices it. तो C टा हिजबो answer. Okay. Then jiba next को 61. Which of the following is correct word formation? Correct word formation कोटा अछि detest plus iable detestable, detest plus iable detestable. तो या भितर देखिबा ई चारटा जो ऑप्शन दिया है ता भितर करेक्ट ऑप्शन टा कोठी कोटा हबो? तो लास्ट है जिवो डिटेक्ट्स प्लस एबीएलई डिटेक्टेबल. ओके, एटा है जिवो करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ता देखिबा 62. एटा गोटे फिलअप्स अछि swarms of insects, a flight of birds, a herd of cattle, a flock of sheep, a dash of wolves. तो एटा है जिवो pack of wolves. And 63 दिबा, the report implies that there is a severe scarcity of water and food. Pick out the word that suggests the news is not quite explicit or direct. Okay, तो एइथरे चारटा ऑप्शन दिया आइछि. आमे देखिबा
गोटे वर्ड को हमको चूज करा पड़ो जोटा न्यूज को डायरेक्ट भाव में कौच आम ये देखा कोटा हम यार आंसर implies severe scarcity report तो ये implies okay then jiba next को 64 को the boys are tired what would be the next logical correct sentence the boys are tired तो यार या परे next sentence टा कौन हबो देखो चारटा sentence दिया है they are playing for almost 2 hours they will have played for almost 2 hours they have been playing for almost 2 hours they will be playing for almost 2 hours तो यार appropriate टा आपनकर कौन है जीवो C नंबर टा they have been playing for almost 2 hours 65 देखिए democratic nations naturally stand more in a need of forms than other nation and they naturally respect them less what do they and them refer to एटी जो they ଆଉ them अछि एटी जो देखंतु they ଆଉ them ता एटा काहाकू रेफर करूची forms democratic nation forms democratic nation forms democratic nation कि other nation तो कौन एटी हेजिबो C हेजिबो forms democratic nations आउ forms ओके सीटा हेजिबो ऑप्शन एटा को रेफर करची दे आउ them टा देटा रेफर करची democratic nation आउ them टा एटी forms को रेफर करची 66 देखिबा I am very tired I would rather कौन हेजिबो एटी आंसर 66 टा I would rather not work anymore okay next देखिबा I think I will wait just Saturday before I decide what to do till Saturday हेजिबो okay 68 देखिबा there was dash concern about frequent power failure in the city so there was a lot of concern about a frequent power failure in the city. Dash the Enquirer, the official maintained that nothing illegal had been done. The dash in the Enquirer, okay. तो ये dash जगह रे कौन हेजिबा हमरो in the Enquirer, okay. In the inquiry, the official maintained that nothing illegal had been done. In the inquiry. In hejibo 70 देखिबा I shall took through your report when have a spare of कौन movement हुएनी minute हुएनी occasion हुएनी तो time हुए time टा हेजिबो answer 71 what dash does it make if you don't buy a car what कौन हेजिबो एठी difference change तो हबनी तो what difference कौन फरक पड़े does it make when you do जेतेबेले आमे गोटे कार न किणु कोन फरक पड़िबो त डिफरेंस हे जिबो आंसर spot the word below has no plural forms in english तो एटी plural forms कोथरे नाही देखिबा birds रो अछि birds हेबो skies हबो places हबो happiness रो plural नाही तो एटा हे जिबो आंसर 73 देखिया put this in direct speech रे हमें एटा को put करिवा sentence को he asked me whether I would attend the day's meeting तो एटा को हमें डायरेक्ट स्पीच रे पुट करिबा तो दैट डेटा हे जिवो हमरो टुडे तो देखिबा एटी कोठी अछि will I attend that day's meeting he said to me will you attend today's meeting he said to me whether you are attending meeting he said to me when you will attend the meeting तो हमर एटी आंसर हे जिवो बी नंबर टा काइना दैट डेटा हे जिवो हमरो टुडे ओके Next देखिबा 74 which of the following is incorrect sentence कोटा अछि hurry is not used to English way the hurry is used to speaking Bangla all the time hurry is getting used as living in Odisha hurry is not used to cooking own food so it incorrect कोटा अछि it incorrect अछि C number ta hurry is getting used as living in Odisha okay 75 Danny you are late you are going to miss you are going to miss your train you dash तो एटी कौन हे जिवो 75 रे आंसर Danny you are late you are going to miss your train you better hurry up are
we going to 676 देखंतु, are we going to the mall? If we are with, better be prepared that don't take cash, we need to pay by card or Paytm. In any case, we are not making any big purchase, are we? तो punctuate this, आमे पंचुएट करिवा करेक्टली एठी। तो आंसर कोन हे जिवो 76 रो देखिबा। Are we going to the mall? If we are, we would better be prepared that don't take cash. We we too need to cash by card or Paytm. In any case, we are not making any big purchase, are we? तो एठी आंसर टा मु सब पॉइंट पढुनी, जो आंसर टा आपन कहि दोछि से आंसर टा ही पढ दोछि। आंसर नंबर सी टा हिजबो आंसर। Are we going to the mall? If we are, we would better be prepared that don't take cash, we need to pay by card or Paytm. In any case, we are not making any big purchase, are we? Okay. 77 देखिए, which numerical code arrange the bits of this sentence? एटी देखंतु को सेंटेंस टा न्यूमेरिकल कोड रे एटी ऑप्शन दिया जाइछि। सेंटेंस कोहेरेंटली रो मीनिंग टा जानिथिले आपण कर देबे। तो एटी आपण देखंतु एटी आंसर टा हमर कोन हबो? टू डू एनीथिंग, द गवर्नमेंट, आई डू नॉट एक्सेप्ट इन दिस मैटर। तो हमको एती जो चारटा बिट दिया आइछि ताकू हमको बिट बाय बिट हिसाब रे हमको अरेंज करियर अछि। तो हमर आंसर टा एटी कोन हे जिवो? आंसर हमर फर्स्ट हे जिवो टू डू एनीथिंग, I do not accept the government in this matter. Okay. तो ये आंसर नंबर बी टा हिजबो आंसर। आंसर टा केमती पढ़िबा हम कहि दोछि। I do not expect the government to do anything in this matter. Okay, बी टा हिजबो एटी आंसर। एटा गोटे ऑर्डर रे आपन को कोहेरेंटली अरेंज करिवार अछि। ओके। 78 रे गोटे फिलअप्स हम गोटे फिल इन द ब्लैंक्स करार अच्छे। मु पढ़ी पढ़ी आपन को आंसर टा कहि देबी क्वेश्चन संगरे, काइना जेते मु क्वेश्चन रे जदी टाइम वेस्ट करली वीडियो टा लेंदी हे जिवो। डैश द 1960s मोहम्मद रफी वाज अ सुपरस्टार। तो मु डायरेक्ट आंसर टा रो ही स्टार्ट कर दोछि। In the 1960s, Mohammad Rafi was a superstar among popular singers in South Asia. He was born in 1924 in Kotla Sultan Singh village in Punjab. For almost 20 years, Rafi was the most sought after singer in the Hindi film industry. In his illustrious career, he received 6 Filmfare Awards, was honored with the National Film Award. तो एटी ऑप्शन नंबर 8 आही जिवो आंसर 78 रो। ओके। 79 देखिवा, टू विच क्वेश्चन वुड दिस बी एन एप्रोप्रिएट आंसर? एट जो क्वेश्चन दिया तार एप्रोप्रिएट आंसर कौन हम? नो, आई वोंट बी available on Mondays and Thursdays. तो यार आंसर कौन हम? Are you coming to office on Mondays and Thursdays? Will you be available on Mondays or B टा हिजबो आंसर। पूरा एप्रोप्रिएट अछि आ पढे दरकार नै, एटा हिजबो आंसर। 80 टा देखिबा हम। Rewrite the sentences beginning with the phrase। एटा गोटे phrase रो beginning the young man रो हमु स्टार्ट करे अछि। The move मत एक्चुअली क्लियरली देखाउनी, सो आपण ट्राई, आपण पाखे तो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी थिबो, सो सेति पे आपण को एते प्रॉब्लम हबनी। तो देखिलो, द मॉव लर्न द यंग मैन हु accompanied the young child to school। तो एतरे आमे फ्रेज स्टार्ट करबा द यंग मैन रू। तो हमर एटी आंसर कोन हे जिवो? आंसर नंबर सी टा हमर हे जिवो एटी आंसर। द यंग मैन who accompanied the young child in school was launched by the mob। ओके। पूरा बिट पढ़नी, जोटा आंसर अच्छे सेटा ही पढ़ देली। It takes dash car then 10 boats to ferry them to this
to the destination. तो ये कौन है जिबो? To ferry them it takes fewer cars than 10 boats to ferry them to destination. Okay, comparative degree रे हमें लिखिछु एटा 82 देखिदबा Alit and Anil have failed the examination, neither dash a good student at school. तो ये कौन है जिबो? Neither was a good student at school. तो एटा ही जिबो आंसर. ओके, rewrite the sentences using let. तो let लगे कि हमको सेंटेंस को ऑथर लेके आ रही सेंटेंस दे दीजिए. Most schools do not allow their students to leave before 4 p.m. तो इतरे हम rewrite करार अछि कौन हबो? Most school do not let their students leave before 4 p.m. एटा ही जो आंसर. आ पढ़े दरकार नहीं, एटा appropriate अछि. 84 देखिदबा complete the sentence using the right form of the verb within brackets. Mahesh wishes he live with his parents in his own flat. Okay, तो कंप्लीट कर अछि सेंटेंस को राइट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगे के हमको सेंटेंस को कंप्लीट करार अछि. तो महेश विशेस दैट हिज पेरेंट्स लिव्ड विथ हिम इन हिज ओन फ्लैट. महेश विशेस दैट हिज ओन फ्लैट फॉर हिज पेरेंट्स. एटा भी हबनी. देन नेक्स्ट देखिदबा महेश विशेस टू लिव्ड हिज ओन पेरेंट्स इन द फ्लैट. एटा भी हबनी. तो लास्ट अछि महेश विशेस दैट ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन हिज ओन. एटा एप्रोप्रिएट अछि. राइट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज्ड अछि. तो महेश विशेस दैट ही लिव्ड. ओके, तो ये लिफ्ट लिव्ड है जी. ओके, तो एटा ठीक अछि. आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट कैरीज द इनकरेक्ट फ्रेज. जोटा इनकरेक्ट फ्रेज को कैरीज करछि सेटा को हमें देखिबार अछि. तो हमें देखिबा एठी स्टार्टिंग हरीश टू सन्स टेक आफ्टर हिम. हरीश कैन नॉट टेक ऑन more work. Harish has taken off in a good job. Harish is taken ill and won't come. तो ये incorrect phrase टाइची taken off. Okay, it a phrasal verb actually. तो it is answers number C. Okay, next देखिबा 86. I beg your pardon when someone says so. What meant that? I beg your pardon what someone says so. जेतरो जणे जणे आपन कहूची आई बेग यू पैराडन ता मीनिंग ता कोन एठी देखिदबा. द स्पीकर हैज नॉट क्वाइट हर्ड व्हाट यू सेड. ओके, तो एठी आंसर ता हिजबो नंबर ए. 87. I have very little time said my boss. Please come to the point. My boss wants me कोन हिजबो to be brief and start talking about the matter right away. Okay, eta is the answer. 88 dekhidewa Satya has been behaving in such a way that somebody he will get into trouble. He is, in other words, asking for trouble. Okay, beta is the answer. 82. 89 dekhiba the sign valet parking in front of a building suggests that valet parking माने जो मैंने जानते बेटा आराम से कर देबे. vocabulary मु कहिछि बार बार strong हबा दरकार. सो एथरे valet parking रो चारटा ऑप्शन दिया अछि. तो ये आंसर टा कोन हे जिवो? you could expect an attendant to show you a parking lot. You could expect an attendant to park your vehicle for you. You could seek a valet's help in negotiating a car deal. You could see a valet help at the parking lot. तो answer it is B number. Valet parking माने you could accept an attendant to park your vehicle for you. Okay, valet parking माने तमे आपण माने एक्सपेक्ट करि परिबे गोटे अटेंडेंट थिबो जे आपनको vehicle को पार कर दबो. ओके, 90 टा देखिबा. 90 रे कोन अछि? No, I have never been to Sambalpur. What appropriate question would give you this answer? तो या ए जो आंसर एटा उडे एक्चुअली आंसर टा अछि यार appropriate question हमें देखिबा. तो कोन हे जिवो? Have you ever been to Sambalpur? एटा परफेक्ट लागुची. एटा ही जिवो आ पढे दरकार नै. ओके,
आई आपण एग्जाम रे सब बीट गुड़ा पढ़िबे ओके टाइम नहीं कि पढ़िबे बट ट्राई करिवे जल्दी जल्दी फिनिश करा पे एठी तो मु चाहूँ कि वीडियो टा एते लेंदी न हो सेते में मु कर दउची आपन को ओके तो 91 देखिए आई हैवंट सीन यू इन अ लॉन्ग टाइम वेयर डैश तो एठी कोन हे जिवो आई हैवंट सीन यू अ लॉन्ग टाइम वेयर हैव यू गॉन ओके सीटा हे जिवो आंसर we were not alone in the room he said dash me dash us there were two others there तो एठी कोन हे जिवो we were not alone in the room he sat beside me besides us there तो एठी beside रो मीनिंग भी अलगा थाए मु आपन मीनिंग एटा हे जिवो आंसर beside रो मीनिंग तो साइड रे अपन कहि परिबे beside the table beside the floor wall beside the wall आउ गुटे besides जेतबेले s लागि जाउची से ता माने apart from हे जाउची ओके next number 93 I am not aware of anyone applying for leave today if I get to know I will inform you at once right in the simple tense रे हमको लिखिबार अछि simple tense रे तो simple tense रे लिखले कोन हबो I was not aware of anyone applying for leave okay yesterday जो today टा yesterday हे जिवो देखो today अछि simple tense रहि गेले today टा yesterday हे जिवो if you got to know I would inform you at once तो 1 ए नंबर टा ही आंसर हे जिवो ओके नेक्स्ट देखिबा 94 one rolls up one's sleeve तो यार आंसर कोन हे जिवो once rolls up one's sleeve to fight जेतबेले आमे फाइट करछु ना आमे हमर जो हातर स्लीव गुडा अछि जेतबेले आमे गोटे फुल शर्ट किंबा किछ गोटे फुल टाइप पिंधुछु फुल ओवर पिंधुछु तो आमे स्लीव गुडा को सबले आमे कोन करथा रोल करथाओ तो ता अर्थ एटा गोटे जो कहंती कि गोटे इडियम अर्थ रे फाइट करिवार थिले ही आमे गोटे ये को मतलब स्लीव को आमे पुल करथाओ ओके रोल करथाओ ओके 95 देखिबा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ irrefutable in this following sentence the car was parked on the right side of the road the bus hit the man on the road who was walking on the left side the driver of the car had nothing to do with the accident that is irrefutable तो यार मीनिंग टा एटी कोन देछि तो हम देखि दबा the meaning टा होछि that which impossible to disprove okay तो एटी बी टा हिजबो आंसर आपण जदी irrefutable रो मीनिंग जानथबे आराम से कर देबे ता मीनिंग होछि that which is impossible to disprove okay हमें देखिबा एबे 96 क्वेश्चन टा 96 रो in which of the following is not a meaning of the word bar कोटा इथरे bar रो मीनिंग barrier or restriction to action or advances a counter in a pub where alcoholic drinks were served edita tata meaning hochi a fleshy land growing from the mouth of a fish eta टिके inappropriate अछि a mental strip below the clubs of a medal तो एटी बार मीनिंग हे जिवो सी नंबर टा ओके जोटा मीनिंग तार हबनी ओके is not a meaning of bar जोटा ता मीनिंग हमने बाकी तीनटा ताको जस्टिफाई करूची ओके एबे देखिबा 97 टा क्वेश्चन नंबर 97 हमको गोटे पैसेज दिया आइची से पैसेज टा पढ़ी कि तार आंसर हमको काढियार अछि सो स्टार्ट करछि से पैसेज courses meaning making an effort started as a student initiative or project on homeless and destitution it was trying hard to discriminalize begging it is the shameful that we have a law that punishes the poor for being poor with
detention up to 10 years. It is the best evidence of apathy that we as a society have towards the poor. Huge number of people with mental illness or disability, victims of violence or displacement, denotified tribes, abandoned elders, Delhi-based workers, lepers, and other are punished every day. Recently, Delhi struck down the anti-begging law. After Delhi, it is now the legal responsibility of all states to repeal their anti-beggary law. People should not be punished for the state's failure. This is injustice. तो एटा गोटे पैसेज ହେଇଗला तो पैसेज रो किछटा क्वेश्चन अछि जार म आंसर आपन कहि देबी व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द कंट्रीज एपैथी टुवर्ड्स द पोर तो हम पाखरे कोन एविडेंस अछि कंट्रीज एपैथी टुवर्ड्स पोर ऊपर हम कोन एविडेंस अछि तो एटी देखि दबा ह्यूज नंबर्स ऑफ पीपल्स आर स्टिल पोर आवर लॉस पनिश रादर देन हेल्प द पोर वी हैव नो प्रोजेक्ट फॉर रिहैबिलिटेशन वी स्टिल हैव एंटी बेगिंग लॉ तो हमर एटी आंसर टा कोन हे जिवो 97 रो 97 आंसर हे जिवो बी नंबर टा our laws punish rather than help the poor. Okay, 98 how are the ill and the poor punished every day केमती गोटे रोगी आउ गोटे पुअर लोक पनिश होचे एवरीडे तार आंसर देखंतु ता आंसर कोन हे जिवो by criminalizing begging and detaining them in shelters by decriminalize begging and enforced anti-begging. No, by detaining the poor up to 10 years by uneven state laws punishing us. तो यहाँ आंसर टा हिजिबो सी नंबर टा by detaining the poor up to 10 years. Okay. What does Delhi done recently? Delhi कौन करथिला recently तो ए पैराग्राफ रे ही अछि जो माने पैराग्राफ भलसे पढिबे जेम जानि परिबे तो दिल्ली कौन करथिला recently देखिबा it has decided that the anti-begging law will no longer been forced. एटा हिजिबो आंसर डायरेक्ट एटी देइछि सब पूरा इजी अछि क्वेश्चन पेपर किछि त डिफिकल्ट नै लास्ट हमर देखि देबा क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेट फेलियर अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्टेट फेलियर कोन अकॉर्डिंग टू द ऑथर तो एटी हिजिबो द नेग्लेक्ट ऑफ द लॉस टू पनिश दोज हु इल ट्रीट द पोर एटा नुए द नेग्लेक्ट ऑफ द destitute and the homeless in the country, the slowness in repealing anti-begging law, the uneven standard of social justice in the country. Answer hijibo B number ta the neglect of the destitute and the homeless in the country. वीडियो तो आमर कंप्लीट हो गलानी आमे क्वेश्चन पेपर को भल से डिस्कस करदेले मु आपन 100 टा क्वेश्चंस रो आंसर भी आपन कहली जो गुडा इंपोर्टेंट अछि जो गुडा बुझी होबनी ता डाउट भी मु आपन क्लियर करली लास्टली वीडियो को एंड करबा आगु मु आपन किछटा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दोची एटा स्क्रीन ने देखि पारथबे आपन को स्लाइड रे देखंतु अछि मोर पेज अछि आम प्रमोद क्लासेस रो तो सेइथरे आपन को ओपीएससी जो माने सिविल सर्विस पे बे ओडिसा सिविल सर्विस पे प्रिपेयर करूछंती तांको पे बहुत बेनिफिशियल आ ओडिसा हाई कोर्ट एएसओ पे आ ओपीएससी एएसओ पे बहुत ही बेनिफिशियल अछि एटा हमर 1 ईयर प्लान रहूची अपन देखि पारथबो एटी देखंतु ऑल वीडियोस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस अनुसार वीडियोस अछि पीडीएफ मिलिबो क्लास नोट मिलिबो सेतरे मिनी मॉक रो जो प्रैक्टिस करंती डेली प्रैक्टिस रो सेटा भी अछि तापरे मॉक प्रैक्टिस भी होची फुल्ली फेज मॉक टेस्ट भी हुए आ 100+ टेस्ट मॉक भी अछि हमरो एथरे प्रमोद क्लासेस रे बोथ प्रिलिम आ मेन पे पढ़ा जाउची आउ सेतरे देखंतु आपण टेस्ट सीरीज जीएस पेपर 1 आउ 2 रो पूरा जति भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब एथरे जो सीरीज बना जाउची जीएस पेपर हमर जो मॉक टेस्ट हुए कि किंबा कि जो भी हमर प्रैक्टिस करोजु हमें सीरीज को सही हिसाब रे बनाउछु एग्जाम पर्सपेक्टिव रे ही बनाउछु सो आपण देखि पारथबे
कम्प्रिहेन्सिव कोर्स ऑन सेक्रेटेड एएसओ रे भी अच्छी आमर लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अच्छी जो पिला मैंने लाइव क्लासेस रे टिके डाउट थाए तो नॉर्मली डाउट हुए नहीं लाइव क्लासेस रे कहीं ना आमर लेक्चरर माने अच्छे आमर लेक्चरर माने नुहे कि एक्सपीरियंस से माने निजे ओडिशा सिविल सर्विस एग्जाम दे कि क्लियर भी करिसंती से माने को माने अच्छे आमर मेंस क्लियर करचंती को माने सिविल सर्विस एग्जाम ऑलरेडी क्लियर करचंती सो आमर सब एक्सपीरियंस्ड वाला ही लेक्चरर आपन को मिलिबे सेमती कि नाहांती कि बिना एक्सपीरियंस रे आछंती तो बहुत ही आपको बढ़िया लगे पढ़ाई पे से जो भी क्वेश्चन दौरान से गुड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव रे से निजे देखी कहीं जो जो पिला माने निजे एग्जाम देते से ही आपको गाइड करें ना सब कहीं कहते कि गोटे टॉपर्स स्ट्राटेजी देखिए गोटे टॉपर्स कौन कौन शुणापी तो आमर जी भी एबे जो भी लेक्चरर गुड़ा अच्छा से निजे एग्जाम देइछन्ती निजे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जानी परछन्ती को क्वेश्चन इंपोर्टेंट कोडा नुहे तो अपन ट्राई करंतु कि अपन जितेबले कि आपण क्लासेस आमर देखुचंती मेरे यूट्यूब चैनल भी अच्छी प्रमोद क्लासेस रे आपण सेथरे जाइए देखि पारिबे आ कोर्सेस तो मु आपन को देखैतिली कौन कौन कोर्सेस आमर अच्छी ओपीएससी एएसओ ओडिशा हाईकोर्ट एएसओ आ प्रिलिम मेंस पे सबु पे आमर 1000+ टेस्ट सीरीज अच्छी सॉल्व करोचु किंतु एबे आमर चाली डिस्काउंट चाली तो प्लीज जल्दी जल्दी जॉइन कर दियंतु सो दैट कि आपनकर जहाँ भी ड्रीम अच्छी पूरा हो सो आज वीडियो मु एंड करछु एठी ही थैंक यू सो मच।